Welcome back, students, to yet another interesting session. Today we will be discussing about a new chapter, that is study of semiconductor devices. That is chapter 3 from electronics 2, electronics paper 2. So this the reason why I am taking this, because in continuation you'll be able to understand or link the importance of this chapter. So first we did semiconductors, right? Then we did study of transistors, and then now we are coming to semiconductor devices. Both the previous chapters in semiconductors, the first chapter we learned about diodes, and the second chapter transistor is one step ahead. Another new device you learned, that is a transistor. तो ये सब जो हमने learn किया, diode, transistor, these are all semiconductor devices, right? Because उसमें semiconductors use किया है. Now, are there any other types? Yes, there are numerous other types of semiconductor devices, but these are all types of what you just learned in the previous chapter. जैसे first chapter में हमने diode पढ़ा, right? So are there any other types of diodes? Yes, there are many more types of diodes. Are there any other types of transistors? Yes, there are many more layers. If you go add layers, something known as thyristor is also there. So should we put a different chapter for each device? Not needed. So this chapter is a comprehension. It's a sum up of all the other types of semiconductor devices. Okay. So what do we look in a semiconductor? Or let's talk about diodes. What are the main important characteristics of a semiconductor diode? अब मैंने जैसे बोला diode बहुत अलग-अलग तरह के हैं. There are many types. You will understand as we move forward in the chapter. There are many types of diodes. So what are we looking in a diode? What are the characteristics of a diode? Like I go to a shop to buy clothes. Okay, a new set of clothes I want. New set of dress I'm trying to buy. What are your characteristics? What are you looking in a dress? Are you looking for the color, size, or some texture, or the material? What are your characteristics of a dress, right? तो आप जब लेने जाते हो तो आपके characteristics fix होते हैं. मुझे ये चाहिए मेरे dress में, right? So similarly, what is your agenda? According to that, you will choose a diode, right? Overall, sub diodes, what are you looking? What are the important things we look into semiconductor diodes? Number one, how does it behave in forward bias and reverse bias? By now, you should be knowing what is forward bias and reverse bias of diode. So how does it behave? That is its behavior in these biasing conditions. Next, how much is the maximum forward current the diode can withstand? Okay, so what is the maximum forward current? Then its behavior in the breakdown region. You know that when a diode is reverse biased, it goes into breakdown, right? After some reverse saturation current. How does it behave in the breakdown region? Okay, and about its PIV rating. PIV rating matlab peak inverse voltage, PIV. Okay, that means कितना maximum voltage वो diode handle कर सकता है. आपको पता है, you know that reverse bias is not an ideal normal PN junction diode के बारे में बात करें. Reverse biasing is it's not a very good type of biasing, or not a perfect biasing to make it work in an ideal condition. So PIV is कितना voltage बंदा handle कर सकता है, कितने voltage के बाद वो नहीं, it will not work. That voltage is PIV. So PIV भी मैं देखूंगी, right? मुझे पता होना चाहिए कि reverse if in reverse bias कितना वो handle कर सकता है, how much it can withstand, I should know, right? So that is the PIV rating, the maximum reverse voltage the diode can withstand, the diode can handle. That is the PIV. Okay, so why do we know, why should we know that? To avoid breakdown. Obviously the PIV of the diode must be more than the peak inverse voltage. Okay, fine. That is why we must know the PIV. Moving on to the types of diodes, let us go on to the first type of diode, that is the signal diode. I will just
share my screen and show you how it looks like. Now I will need the, so this is the chapter's name, and this is how the signal, the first type of diode, that is signal diode. Okay, signal diode, please don't get intimidated by the name. Signal diode is a normal diode. Normal diode जो हमने first chapter में देखा था, that is a signal diode. Okay, so these are normal germanium and silicon diodes, and these are general purpose diodes. Okay, so radio wave detector या फिर कोई electronic switch में ये use किया जा सकता है, और ये these can handle only very small currents and voltages. Okay, तो ज्यादा maximum current range is 250 milliampere. Okay, PIV up to 150 volts. So normal PN junction diode जो देखा है, these are signal diodes. So this is an example which I have shown on the board. This we have already done, so by now you must know how it looks. I have already told you a shortcut to remember. This is actually, आपको ये बड़ा दिख रहा होगा, but it's hardly this much. If you can see me on the screen, hardly वो इतना रहता है. It's a very small diode. When you draw on the in your notebooks, when you see it in the textbook, you feel that's very big. It's very, very small. इसको मैंने zoom करके लगाया है. It's actually very, very small. Okay. This is the symbol. Now see, if we have many students in class, how do we differentiate? We have certain names, right? So this is that particular name of that diode. Fine. If I take out this name, that means it is this particular diode. Can you see this black marking? This black marking is that is how you identify that this is a cathode of that particular diode. क्योंकि मैं कैसे भी पकड़ सकती हूँ, आप पेन कैसे पकड़ते हो, आप ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, right? But this point indicates that this is the point from where you write, correct? Same thing marking है cathode पता करने के लिए, क्योंकि biasing के time पे cathode you have to biasing के लिए कहाँ PN है, क्या है, you have to know, right? So that is why कैथोड को नेगेटिव पे कनेक्ट करने के लिए यू शुड नो वेयर द कैथोड इज, दैट इज व्हाई मार्किंग दिया है ब्लैक कलर. मैंने एक इजी तरीका बताया है कैसे याद करना है डायोड को. यू ड्रॉ द सिंबल लाइक दिस, राइट? व्हाई इज इट नॉट विजिबल? ओके, यू ड्रॉ इट लाइक दिस, एंड क्या ट्रेस करने बोला था मैंने? उल्टा के. ये है उल्टा के. आई विल ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी इट. प्रोबेबली येलो दिखेगा, मे बी ग्रीन. Okay, so you will trace the उल्टा के. तो ये है उल्टा के, ये है उल्टा के, दिख रहा है? उल्टा के जिस साइड में बनता है वो है कैथोड. आई नो कैथोड स्टार्ट्स विद C. दिस इज द वे यू शुड रिमेम्बर. फॉर रिमेम्बरिंग मैंने ऐसे बनाया है. आई नो दैट कैथोड स्टार्ट्स नॉट विद K बट विद C. चलता है. जिस साइड में K बनता है उस तरफ का है कैथोड. समझ में आया? मतलब दैट इज नेगेटिव. कैथोड मतलब नेगेटिव, एंड द उल्टा वाला सेक्शन क्या होगा? एनोड. दिस इज द वे यू विल रिमेम्बर इट. ओके, फाइन. आई होप I've made things clear. A normal PN junction diode, small currents, small voltage, okay, it will handle. That is a signal diode. Next is a power diode. Okay, power diode. One more thing I would like to tell over here, that this cathode jahan pe, that is the N section, and where the anode, that is the P section. So this is a PN junction diode. Okay, so N ko forward bias karne ke liye, this in every single class I am repeating this so that when you hear it, you this gets reinforced and it is in your mind. N stands for negative. N stands for N-type semiconductor, and I know, but for making you remember, ऐसे याद रखोगे आप. N stands for negative. नेगेटिव मतलब बैटरी का नेगेटिव इधर कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो फॉरवर्ड बायस होगा. P मतलब पॉजिटिव, मतलब बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो फॉरवर्ड बायस होगा. इन दोनों कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन उल्टा है, then it becomes reverse bias. Okay, this you have to remember throughout till your class 12, till the end of class 12 in fact. So the next type of diode is power diode. अब इसमें the name itself indicates, the name itself tells you that it is an increased level of power. Okay, increased level of power. It is mostly made up of silicons, but it can handle large power. Okay,
So where is it used? It can be used जहाँ पे latch signals use करना है, that is rectifiers. Rectifier, a different chapter is there in class 12th itself. Okay, in power supply पूरा एक section है. Then you will get to know what is rectifier. Rectifier मतलब, as of now you just remember, I am rectifying my mistakes. बोलते हैं ना सर, मैं rectify कर रहा हूँ मेरी mistakes. Rectifier मतलब change करना, right? In electronics, rectifiers मतलब AC signal को DC signal करना. That is known as rectifier. Okay, rectify करने वाला है. Just remember that much. And in that we need diodes. So in that case, you can use this power diodes because the power is, it can handle large amount of power. Okay, so the maximum forward current here is 30 ampere, and the PIV is about around 1000 volts तक handle कर सकता है वो, around 1000 volts. यहाँ पे क्या था सिग्नल डायोड में बहुत कम था, 250 मिली एम्पियर था फॉरवर्ड करंट, है ना, 250 मिली एम्पियर था, एंड PIV was up to 150 volts. इतना कम है. अब देख रहे हो फर्क, देख रहे हो, 150 and 1000, 150 कहाँ, 1000 कहाँ. So that itself indicates that it can handle high power. Okay, because power is the product of voltage into current. Now this is how it looks. It's obviously uska packaging सब थोड़ा सा अलग है, but the symbol does not change. The symbol is same, anode and cathode. मैंने बोला है ना, cathode remember उल्टा K, ठीक है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए फॉरवर्ड बायस के लिए. I'm repeating this again and again and again. Fine. Let's go to the next one. The next one is now the next type of diode is not tunnel diode like it showed. I will show you the picture, but before that I have something, some things you need to remember. The next type of diode is a Zener diode. Okay, what is the name? The name is Zener diode. Now, it is a normal, it is slightly different than the PN junction diode. Okay, it is slightly different. What is the speciality of the Zener diode? उसका symbol है Z आता है उसके symbol में. ये normal PN junction diode है, right? This is a normal PN junction, right? So in Zener diode, the symbol will look something different. A Z will be attached. Okay, दिख रहा है? Z दिख रहा है आपको? That means this is Zener. It's a Zener diode. Okay. Now, what is the speciality of a norm, or what is the difference between a normal PN junction diode and Zener diode? Now, you know that a normal PN junction diode को हम reverse bias में नहीं करते, connect नहीं करते, वो बहुत बड़ा गुना हो जाता है, right? It's not, you don't do that. It acts as an open switch. But Zener diode, it allows current to flow in the reverse direction. That means it is designed to operate in the reverse direction. How? Because it is very heavily doped. It's a diode that is heavily doped, and it is designed to operate in the reverse direction. If I have an application जहाँ पे मुझे reverse current के बारे में बात करना है, then I can use Zener diode. Okay, it not only allows मतलब forward and reverse दोनों हम काम कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि reverse बोला तो सिर्फ reverse में ही काम करेगा, but it is designed that reverse current will also flow in it. Okay, now Zener नाम क्यों लिया है? Why the name Zener? Because Clarence Melvin Zener was the first person to describe this. Okay, so this diode was named after Mr. Zener. Okay, fine, in 1934. Fine. So how does it perform in reverse bias? See, normal forward bias mein, if I plan to draw its VI characteristics, it behaves like a Zener diode. Normal diode जैसे behave करता है in the forward bias. That means 0.7 volt. If it is silicon, for silicon it is 0.7, right? The barrier potential cross करके the knee voltage 0.7 तक थोड़ा सा, and then it will start conducting, right? And in the reverse bias, what the speciality of this Zener diode is that when connected in the reverse bias board, a small leakage current flows through the diode.
तो जो जैसे अपन नॉर्मल डायोड में होता है, स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो, but as the voltage increases to a particular voltage, that is known as Zener voltage, current starts flowing through the diode. Okay, that means वो stabilized रहता है, तुरंत ऐसे ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक वो स्टेबलाइज्ड करंट रहता है, फ्लो होता है डायोड में, फाइन, एंड देन इट गोज इनटू द ब्रेकडाउन रीजन, फाइन। सो वो कौन सा वोल्टेज है जहां तक मुझे स्टेबलाइज्ड करंट मिलेगा, दैट वोल्टेज इज नोन एज VZ, and that's known as Zener voltage, and after that it will go into the breakdown region. Okay, so this is all about Zener voltage. क्या क्या याद रखना है आपको? It's heavily doped. Heavily doped का क्या मतलब है? उसमें carriers ज्यादा हैं. Fine, number one. Number two, it can work very well in the reverse direction also. Fine. And number three, you have to remember that क्या है उसमें reverse direction मतलब क्या? When it is in reverse bias, stable current मिलता है एक particular voltage तक, that voltage is known as Zener voltage, and after that the breakdown region starts. Okay, so you have to remember all these things in Zener diode. Now, what is the speciality is that Zener diodes are operated in the breakdown region. अब देखो क्या हो रहा है. Now in normal PN junction diode ये ऐसा straight line नहीं था, right? It would go like this, ऐसे चला जाता. तो ये voltage stable है क्या? नहीं, नहीं, ये voltage भी increase होते जा रहा है. But in Zener diode this is a steep, straight, almost sharp curve. That means this voltage is stabilized. This voltage is constant. So you can get till the Zener voltage is attained. After that you get for one voltage you will get a proper current. Okay, but ये current है, ये current का axis है. तो देखो current कैसे increase होते जा रहा है, increase होते जा रहा है ना. आप ऐसे plot करोगे तो increase होते जाएगा. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी हाई करंट पे काम करे. यू विल हैव करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स, तो उसको लिमिट करने के लिए लिमिट तक you can make this work. Okay, so there are other circuits to balance that current. इतना ऐसा नहीं कि कितना भी करंट ले लो. So this VZ is constant. ये एक फायदा है कि ये इसके आगे it's not variate, it's not varying, right? ये स्टीप स्लोप है, सीधा आ रहा है. तो मतलब आप इसको ट्रेस करके ऊपर लेके जाओगे तो ये VZ Zener वोल्टेज पे स्टक है. समझ में आया? ओके, दैट मीन्स द करंट इज इंक्रीजिंग बट द वोल्टेज इज नॉट इंक्रीजिंग. दैट इज द advantage, and it therefore it is used in the breakdown region. ठीक है. Will you ever imagine a normal PN junction diode to work in the breakdown region? It will not work in the breakdown region, right? Because it's not constant. ऐसे जाता है, voltage भी change हो रहा है, current भी. But in Zener voltage, it can work in the breakdown region. This is the speciality. Okay, now I'll show you. I will share my screen and show you how it is, how it looks like. I've almost told the symbol is like this. I'll show you the VI characteristics as well. So this is how the VI characteristics of Zener diode looks like. Okay, so ye dekh, if you can see over here, this 0.7 silicon Zener diode, this 0.7 tak it is knee voltage. You will hardly get any current. Okay, once it crosses 0.7 knee voltage, जो 0.7 है वो जैसे ही क्रॉस होता है, you know that knee voltage for silicon is 0.7 volts, for germanium it is 0.3 volts. जैसे 0.7 क्रॉस कर लेता है, you get forward current. Okay, that's okay. Normal PN junction भी ऐसे ही काम करता है. अब इसका स्पेशलिटी कहाँ है? रिवर्स बायस में. Now reverse bias, till a particular voltage, this voltage जहां तक breakdown होने वाला है, this voltage is VZ, that is Zener voltage. Till a particular voltage you get reverse saturation current. Okay, and this particular region जहां पे आपको ये reverse saturation reverse current मिलता है, not reverse saturation current, this area is known as this particular area is known as leakage region, because this is
very small current, isn't it? Very very small current. If you extend it और ये y axis पे देखोगे तो बहुत बहुत छोटा current है. Therefore this is known as leakage current. It's very difficult to write over here. I will write with this text box. It is leakage current, the leakage region. ठीक है? This region जहां तक VZ है, जहां तक Zener voltage पहुंचता है, that this region is known as leakage region because very little current you are getting. Now what happens after the Zener voltage has reached, the current starts increasing steeply. Now if you can see over here, ये voltage change हो रहा है क्या? नहीं. करंट इंक्रीज होते जा रहा है लेकिन ये वोल्टेज कांस्टेंट है. आप एक्सटेंड करके देख सकते हो, ये ग्राफ VZ पे ही अटका है. दिस रीजन इज नोन एज द ब्रेक डाउन रीजन. ओके, और इट इज आल्सो नोन एज द ज़ीनर रीजन. ओके, दिस इज द वोल्टेज, ज़ीनर वोल्टेज, एंड दिस इज नोन एज द breakdown region and it is generally operated in the breakdown region. तो ये एक फायदा है आपका. करंट अगर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो it will not affect the voltage. That is why it can be used in many ways, and one such application is given in your textbook, and that is Zener diode as a voltage regulator. Now before showing you the picture, I want you to tell you what is voltage regulator. Voltage regulator मतलब if your input is input voltage, आपको पता है when during summers when your fan is on, कभी कभी fan light गई नहीं है लेकिन fan का speed कम हो जाता है, आप क्या बोलते हो? voltage कम हो गया, है ना? your tube light starts blinking, तो आप बोलते हो अरे voltage कम हो गया, कम voltage है, मतलब power off नहीं हुआ है. voltage fluctuations होते हैं, सबके घर में होता है, सब जगह होता है. I'm sure you must have experienced it as well. Such voltage fluctuations is happening from the input, right? तो input के voltage fluctuations के मेरे device damage हो सकता है, voltage कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना? तो मेरा if for example मेरा मोबाइल अगर चार्जिंग पे है, एकदम से voltage spike आ गया, it may damage my mobile which was on charging, right? So such spikes, rise and such fluctuations in voltage can be controlled using a voltage regulator. Regulator मतलब regulate, उसको जो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है voltage को सेम लाइन पे ही रेगुलेट करके लेके जाना, एक ही लेवल पे लेके जाना, उसको बोलते हैं रेगुलेट. दैट इज नोन एज रेगुलेशन. और हम वोल्टेज को रेगुलेट कर रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन. Okay, now I will show you the how the block diagram, if you can see, if I may say that. This is unregulated. Just consider this as an unregulated voltage supply. ठीक है, इसको इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, अनरेगुलेटेड सिंपल पावर सप्लाई. तो मैं यहाँ पे PS लिखती हूँ, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई. ठीक है, ये कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, वोल्टेज कभी ज्यादा हो जाता है कम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है. ओके, नाउ लुक हाउ इट इज डिजाइन्ड. देयर इज रेजिस्टेंस इन सीरीज, देन कम्स द ज़ीनर डायोड. सिंबल समझ में आ गया आपको? Z दिख रहा है, that is Zener diode, and then we have the load resistance. The load can be any device, okay, laptop, mobile phones, कुछ भी. ठीक है, तो लोड मत जो मैं अटैच करती हूँ उसको लोड बोलते हैं. तो द रेजिस्टेंस इज RL. नाउ टेक द फर्स्ट कंडीशन. अगर इन वोल्टेज बढ़ गया, एकदम से वोल्टेज बढ़ गया, ओके, सो इफ व्हेन दिस वोल्टेज goes, if there is an increase in the input voltage, okay, current through the Zener diode increases. देखो यहाँ से करंट पास होगा, there are two branches, दो तरफ ब्रांच हो रहा है ये. सो करंट IZ पे और बचा हुआ करंट फिर जाएगा IL में, राइट? समझ में आया? मतलब IS ये एक आ रहा है बंदा, लेकिन बंदा दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है. Zener डायोड की तरफ स्प्लिट हो रहा है और इधर भी स्प्लिट हो रहा है. ठीक है, so if this current voltage increases, you know using Ohm's law that V is directly proportional to I, right? V increase होगा, current भी increase होगा. तो if this voltage increases, IS will also increase. तो ये बंदा क्या करेगा? अरे बढ़, इधर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो टू कीप IL कांस्टेंट ये बंदा ज्यादा करंट यहाँ पे खींच लेता है. Are you understanding? That means ये बढ़ गया तो ये बोलता है अच्छा अच्छा तू बढ़ गया, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो
ज्यादा करंट वो यहाँ पे अब्सॉर्ब कर लेता है. द IZ increases keeping the IL constant. Okay, so IL is constant, therefore there is no fluctuation in the output. Okay, now the even if it is reducing, same thing will happen. If this is reducing, it will affect the current also, right? If there is a decrease in the input voltage, IZ will decrease. बोलेगा ठीक है तुम कम हो गया, इसको कम नहीं होना चाहिए, इसका करंट कम नहीं होना चाहिए. आउटपुट पे जैसा कांस्टेंट है वैसे कांस्टेंट रह जाता है. मैं करंट कम लूंगा, इसको जैसा है वैसा जितना है IL वो पूरा IL होना चाहिए. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द आउटपुट. ठीक है. अब रेगुलेशन सिर्फ इनपुट का ही नहीं. रेगुलेशन मीन्स व्हाट इफ आई चेंज दिस रेजिस्टेंस. मैं रेजिस्टेंस चेंज करूं, मैं मोबाइल की जगह कोई लैपटॉप चार्ज पे या मैकबुक प्रो चार्जिंग पर, मैकबुक प्रो नहीं, लैपटॉप चार्जिंग पर रख देती हूँ. माय लोड इज चेंजिंग, तो क्या रेगुलेशन में इफेक्ट होना चाहिए, फ्लक्चुएशंस होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट? इन दैट केस आल्सो, इफ एट द आउटपुट देयर इज सम प्रॉब्लम, okay, if when this in the output there is some problem, you know that VZ Zener diode works in the breakdown region as well, right? So even if there is fluctuation in this current, even if this current changes, the voltage will not change, right? VZ remains constant, even though IZ, which is flowing through, it may change. So there is even if there is reduction in the load resistance, अगर load resistance कम हो गया तो ये they react. So if there is a reduction in the load resistance, according to Ohm's law, you know that resistance and current का जमता नहीं है, they are inversely proportional to each other. अगर load resistance कम हो गया, IL बढ़ेगा, है ना? They are inversely proportional. ये कम हुआ तो ये ज्यादा होगा. अब ये ज्यादा हुआ तो क्या है? उल्टा, इधर अफेक्ट नहीं होना चाहिए. पहले केस में क्या देखा? इनपुट में बढ़ रहा है वोल्टेज, आउटपुट में अफेक्ट नहीं होना चाहिए. रिवर्स इज आल्सो एप्लीकेबल. आउटपुट में अगर कुछ चेंजेस है तो इनपुट में अफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो इफ दिस इज इंक्रीज्ड, if this increases, if IL increases, then IZ decreases. Okay, so that इधर इफेक्ट नहीं होना चाहिए. there should be no effect in IZ. तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. ठीक है, ये ज्यादा हो गया तो ये कम हो जाता है, क्योंकि दोनों ऐड करने के बाद IS, ये दोनों ऐड होगा ना, ये इधर से ऐड होगा, ये इधर से ऐड होगा और IS में जाएगा, राइट? तो IS को अफेक्ट नहीं होना चाहिए. समझ में आया? बिकॉज IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL. तो ये बढ़ गया तो ये IZ कम हो जाता है, बिकॉज IS अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और IS अफेक्ट नहीं हुआ तो इनपुट भी अफेक्ट नहीं होगा, सोर्स input voltage भी affect नहीं होगा. So in this way, the Zener diode and the current flowing through it and the voltage across it manages to regulate the whole system. Regulate मतलब एक ही level पे लेके चलता है. So it's a very, very important thing. Okay. Now coming to the next type of diode, that is varactor diode. It's also known as varicap. Okay, varactor diode बोलते हैं इसको. Varactor diode, the speciality is that we are looking at it as a capacitor. Now in a normal diode, this is PN, right? Now इसके बीच में this is the depletion region. Yeah, this region has got no free charge carriers, therefore it is known as the depletion region. Ions है यहाँ पे, right? रिकॉम्बिनेशन होने के बाद यहाँ पे आयन्स है, उसमें कोई फ्री कैरियर्स नहीं, इसलिए उसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं. सो कैन यू इमेजिन, यू हैव टू इमेजिन इट लाइक अ कैपेसिटर. मतलब ये दो प्लेट्स जैसे हुए क्या, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, और बीच में है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो दिस विल एक्ट एज अ कैपेसिटर. ओके, नाउ इन रिवर्स बायस कंडीशन में देखो क्या होता है. इन रिवर्स बायस कंडीशन मैंने क्या बोला है, P को P पर पॉजिटिव चाहिए. पॉजिटिव है क्या? नहीं, नेगेटिव है, मतलब ये रिवर्स बायस है. मैंने जो बोला वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज रिवर्स बायस कंडीशन, राइट? सो इन रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन गोज ऑन वाइडनिंग, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एंड दिस विड्थ गोज ऑन इंक्रीजिंग इन रिवर्स बायस,
है ना. So this, as you go on increasing the reverse bias, valence electrons from p side get removed, okay, and they are added to the n side. Fine, because पॉजिटिव इधर है ना, तो यहाँ पे अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस होके यहाँ पे होता है. That is why it goes on increasing, increasing, increasing. So this is something like charging. Okay, this is something like charging a capacitor. Fine. So this capacitance, ये जो इधर मैं जो बोल रही हूँ कैपेसिटर जैसे इमेजिन करना है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, CP, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. मतलब पीएन जंक्शन डायोड कैन आल्सो एक्ट एज अ कैपेसिटर. क्यों? क्योंकि इधर जो नेगेटिवली चार्ज थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होते हैं, इधर हो जाता है डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाता है. This will act as a capacitor, and the two sides of the depletion layer are the sides of plates of the capacitor. So what is the symbol? The symbol looks something like this. In some books it is also given like this, normal diode and then one more line. तो ये capacitor जैसे दिखता है, two plates है ना, it looks like a capacitor. Terminals are the same. This is the cathode, this is the anode. Okay, terminals remain the same. Okay, so if I want to draw a normal BI characteristic, okay, if I just want to draw it, fine. And the more negative you go in voltage, this is the origin, right? So now as we go into more, जैसे voltage more negative होता है और negative होते जाता है, negative voltage, the depletion layer तो बड़ा होता है, but capacitance कम होता है. So as जितना कम नेगेटिव उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, है ना, जितना कम नेगेटिव उतना ज्यादा कैपेसिटेंस. सो एज यू गो टू नेगेटिव, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है. ओके, दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ इट. फाइन. सो how can we understand, or how can we describe the capacitance of a varactor diode? By the formula C is equal to epsilon A upon W. Okay, so what is epsilon? Permittivity. This is constant and generally given in the numerical if asked. This chapter is basically focusing on theory. Okay, basically it focuses on theory, not on numericals. So you just need to remember this. A over here is area of the junction, how much there is, and W is the width of the depletion layer. तो आप ये समझते हो, जितना depletion layer का width बढ़ते जाएगा, उतना capacitance कम होते जाएगा, क्योंकि they are inversely proportional. ठीक है, जितना पतला depletion उतना अच्छा, उतना ज्यादा capacitance. Fine. Okay, now what this was all you need to understand about varactor diode. Fine. Now one thing I missed out. This is of Zener. There are some characteristics of Zener diode. ठीक है, Zener diode के ratings क्या होते हैं? PZ, power. Power means, power of Zener diode means it is the product of voltage and current. VZ into IZ, Zener voltage into Zener current. Okay, maximum current rating, that means कितना maximum current वो diode handle कर सकता है. Ratings मतलब आप जब लेने जाते हो diode तो उसकी speciality, you know, you buy a particular product using these terminologies. Okay, ऐसे ही नहीं जाके बोल देते मुझे diode दे दो. So they will ask you what rating do you want, what is the power rating you are looking for, so you can tell all this. And Zener resistance or Zener impedance is it is generally obviously it is normal resistance, जैसे it is related to Zener voltage and Zener current. Okay, so that is these. So today we learned 3 types of diodes. 4 sorry. Signal, normal p-n junction diode को signal diode बोलते हैं. Second, power diode, थोड़ा सा power high हो जाता है, high power handle कर सकते हैं तो उसको power diode बोलते हैं. Third, Zener diode, high doping, reverse current, reverse area, reverse current भी handle कर सकता है, that is Zener diode. And the fourth one is varactor diode or varicap, that means a diode that can also be acting as a capacitor.
Okay, so these are the 4 types of diodes we learned. 3 to 4 diodes are left that we will do in the next session. Thank you.